Good morning, students. Now let us start with our second chapter, federalism. Now, before understanding the concept of federalism, let us have a quick recap of the first chapter. Let us get back to the contrast between Belgium and Sri Lanka. If you remember that Belgium had accommodated their diverse population and in Sri Lanka they had majoritarianism, because of which Belgium turned into a federal form of government where there were two or more than two levels of the government, whereas in Sri Lanka it had only one form of the government, that is the central government. That we have saw in the last chapter. You would recall that one of the key changes made in the constitution of Belgium was to reduce the power of the central government and give these powers to the regional government. Remember, we have done one question, what is meant by the model of government of Belgium, in which we have studied first point that Belgium amended their constitution 4 times between 1970 to 1993 to accommodate their diverse population. Second point, we have done that in some powers in central government there were equal number of French and Dutch speaking ministers. The third point which we have done over there was that Belgium amended their the central government gave some powers to the regional government. This is what we are talking about over here. रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्ट इन बेल्जियम अर्लियर. रीजनल गवर्नमेंट्स बेल्जियम में पहले भी थी पर उनके पास अपनी एक्सेसिव पावर्स नहीं थी. पर 1993 में बेल्जियम ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया. अमेंड मतलब चेंज किया और उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर्स लेकर रीजनल गवर्नमेंट को वो पावर्स दे दी. They had their roles and powers. Now, बेल्जियम गवर्नमेंट में यानी कि रीजनल गवर्नमेंट जो बेल्जियम में एग्जिस्ट करा करती थी उनके पास अब अपनी पावर्स आ गई. बट ऑल दिस पावर्स वर गिवन टू दिस गवर्नमेंट एंड कुड बी विड्रॉन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. बिफोर 1993 ये पावर्स कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट उनसे ले सकती थी, पर आफ्टर 1993 ये ऐसा नहीं कर सकती थी. नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट टेक अवे द पावर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. नाउ द 1 mark क्वेश्चन ओवर हियर इज, how did Belgium change from unitary structure to a federal form of government, and when did Belgium became a federal form of government? So when did Belgium became a federal form of government? You can mark the answer from here. The changes that took place in 1993. Remember, just now I have told you that Belgium government amended their constitution 4 times from 1970 to 1993. This was the change which they took. The change that took place in 1993 was that the regional government, yani ki state, 2 regions, government at 2 regions, Flemish region and Wallonia region, were given constitutional powers that were no longer dependent on the central government. Now these 2 regional governments, the Flemish region and the Dutch region government, they were not dependent upon the central government. Thus Belgium shifted from a unitary to a federal form of government. Unitary matlab 1, federal matlab 2 or more than 2 levels of the government. Sri Lanka, however, continues to be for all practical purposes a unitary system where the national government has all power. जबकि श्रीलंका में अभी भी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. वहां पर अभी भी सिन्हाला सारी की सारी पावर्स कंट्रोल करते हैं. तमिल लीडर्स वांट श्रीलंका टू बिकम अ फेडरल सिस्टम. तमिल लीडर्स जो वहां के हैं, जो सेकेंड वहां की लैंग्वेज स्पीकिंग कम्युनिटी है तमिल लैंग्वेज, वो चाहते हैं कि श्रीलंका में भी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जाए, पर अभी ऐसा नहीं हुआ. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर विच यू मे गेट इनटू योर बोर्ड एग्जामिनेशन आल्सो इज, what is federalism? What are its key features? If you look carefully, it's written over here. What is federalism? What are its key features? So what is meant by federalism? Federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country. फेडरलिज्म उसे कहा जाता है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ रीजनल गवर्नमेंट्स और गवर्नमेंट एट लोकल लेवल्स भी अपीयर करती हैं, अकर करती हैं. जैसे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल लेवल पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है. सो वेयर देयर आर 2 or more than 2 levels of the government is what is known as federalism. Mark answer from here. Usually a federation had 2 levels of the government. कोई भी फेडरेशन जो होती है उसमें 2 या 2 से ज्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है. एक वो गवर्नमेंट होती है जो एंटायर कंट्री के लिए होती है. One is the government for the entire country,
that is usually responsible for a few subjects of common national interest. एक वो गवर्नमेंट होती है जो पूरी कंट्री के लिए होती है, जैसे इंडिया में हम उसे सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं. ये सेंट्रल गवर्नमेंट उन सब्जेक्ट से रिलेटेड डिसीजन लेती है जो नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं, जैसे डिफेंस हो गया, जैसे करेंसी हो गया, जैसे रेलवेज हो गया. आपने देखा होगा हमारे इंडिया में एक यूनिफॉर्म पॉलिसीज है इन सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर. The other are governments at levels of provinces or states that look after much of the day-to-day administration of the state. वहीं पर second level of the government इंडिया में exist करती है जिसे state government कहा जाता है, जो day to day चीजों को एडमिनिस्टर करती है. जैसे आपने पुलिस देखा होगा, आर्मी कम्स अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट बट पुलिस कम्स अंडर स्टेट गवर्नमेंट. Both these levels of the government enjoy their power independent of the other. ये दोनों ही गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, अपनी पावर्स को सेपरेटली एंजॉय करती है. दे आर नॉट आंसरेबल टू ईच अदर, हाउएवर दे आर आंसरेबल टू पब्लिक एज अ होल. किसी भी डेमोक्रेसी में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने किसी भी डिसीजन के लिए आंसर नहीं करना पड़ता है, पर ये दोनों ही गवर्नमेंट दे आर आंसरेबल टू पब्लिक एज अ होल. Now, we are going to leave this paragraph right now. We will move forward to this one. I will come back to this paragraph later on. Now, we were doing this question. What is federalism? What are its key features? So, over here you have marked the definition of federalism. Now, let us talk about its key features. Let us look at some of the key features of the federalism. Remember, you are going to get this question in 5 marks. So, you have to mark one mark, definition as 1 mark, and you have to write down at least 4 other features of federalism. So very first feature of federalism is there are 2 or more than 2 levels of the government.